My fellow viewers and dear students, I welcome you all and I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, I am going to start a new chapter from your physics portion, that's electricity. We will take each and every topic in this very chapter. Before jumping to the topic, or I mean to say that before connecting the first topic of this chapter, let us get to know about the history of this electricity. As you are very well aware that there are different types of appliances that we use in our homes, like we use these lamps, different lights, fans, motors, radios, televisions, computers. These all appliances, dear students, they work on electricity. Historically, it was frictional electricity that was understood first. Later on, about 2000 years ago, a Greek philosopher whose name was Thales, he observed that a piece of amber rod, if rubbed with any other material, attracts small objects. Dear students, the word electricity is derived from the Greek word electron, which means amber. The ancient Greeks, however, did not proceed beyond this finding. But in 1600 AD, Dr. Gilbert, a physician, he showed that besides this amber rod, there are some other substances like glass, diamond. They also possessed the same property. But it was an American inventor, Benjamin Franklin, 1706 to 1796, who experimented with this electricity and made, we can say, understanding in this very phenomenon. Dear students, but by the middle of the 18th century, there were machines that could generate large electrical charges. Finally, we can say that the invention of a device for producing current electricity was a result. It was a result of an accidental discovery by the Italian professor Luigi Galvani, but it was later on Alessandro Volta who made the first battery in 1800. So today we understand the use of these batteries which produce chemical, or we can say electrical and magnetical effects or magnetical fields, etc. So this is a little bit history about this electricity, huh? How it was understood and how it was produced, how it was invented, whether it was accidental this or experimental one. Now let's get to our topic. Here we need to understand first here what's electric charge. So electric charge किसको हम कहते हैं, electric charge है क्या? Dear students, this electric charge, it is defined as a property of matter. So electric charge क्या है? It is the property of matter that causes it to experience a force when kept in an electric and magnetic fields. So we can define this electric charge, dear students, that it is the property of matter. It is the property of matter. Matter, you know that. It is the property of matter that causes it to experience a force. So when a matter is kept in an electric field or electric circuit or in a magnetic field, it experiences a force. The force, whether it is the force of attraction or the force of repulsion, dear students, this is the electric charge. As you know that we have got two types of electric charges. One is called a positive charge and second is called a negative charge. And this positive charge is because of the positively charged particles which are known as protons, and negative charge is the by the we can say another type of particles which are termed here as electrons. Dear students, you have already learned this, or you are aware about it. It is known to you that it's a well saying that like charges repel each and unlike charges attract each other. That means if we kept positive and positive charge, that will repel. Similarly, if we kept negative and negative, they will repel from each other. But if we kept positive and negative charge close, they will attract each other. So what's electric charge? It is basically the property of matter that makes it to feel, or that causes it to experience a force when it is kept in an electric or magnetic field. Now, dear students, what is the SI unit of this electric charge? Dear students, the SI unit of the electric charge is coulomb. ये आपको याद रखना है. The SI unit of this electric charge is coulomb, which is represented by C. Dear students, this charge is represented by symbol Q. ये भी आपको याद रखना है. SI unit of this charge is coulomb, which is represented by C, and this charge is represented by symbol Q. Now, if you are going to define one coulomb, or we can say one C charge, so one coulomb charge
किसके बराबर होता है? इट हैज बीन फाउंड डियर स्टूडेंट्स दैट वन कोलम चार्ज इज इक्वलेंट टू द चार्ज कंटेंट नियरली इन अबाउट 6 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक कोलम के अंदर उतनी चार्ज होती है जितनी चार्ज कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स में होती है, 6 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन। से भी आपको याद रखना है। So one coulomb charge is nearly equivalent to 6 into 10 raised power 18 electrons। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको करके दिखाया है। So here this charge, it is numerically given Q is equal to Ne, where N is the number of electrons. If Q is equal to 1 coulomb, अगर चार्ज 1 coulomb बराबर होगी और इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो होती है that's 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, here we can determine the number of electrons in the 1 coulomb of charge. So N is equal to Q divided by E. So it's 1 divided by 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. तो थोड़ा सा रफ पर मैंने दिखाया है। दिस इज 100/16 इंटू 10^18 दैट्स इक्वल टू 6.2 इंटू 10^-18। सो एन इज इक्वल टू, इस पॉइंट को हम नहीं लिखेंगे, एन इज इक्वल टू 6 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस न्यूमेरिकल से हमें साबित लगता है कि एक कोलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हियर आई हैव डन सम रफ वर्क। दिस इज 1 डिवाइड बाय, ये 1.6 था तो इसको 16/10 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10^-19। तो क्या किया मैंने, इसको मैंने इन्वर्स कर दिया, ऊपर की तरफ ये चला गया तो ये बनेगा 10 डिवाइड बाई 60 इंटू 10^-19। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया है, 10 से आप ऊपर भी मल्टीपल करो नीचे भी मल्टीपल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10 कट हो जाएगा, हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट वापस मिलेगा। लेकिन इससे ये फ़र्क होगा, 10 इंटू 10 हमें 100 मिलेगा डिवाइड बाई 60 इंटू 10 रेज़ पावर। चूँकि यहाँ पर नीचे था 10^-19, ये 10 रेज़ पावर 1। एज यू नो दैट इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो -19 में से +1 तो ये बन जाएगा -18। सो हियर वी गेट 6.2 इंटू 10^18। जब ये 18 ऊपर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा। सो हम ये कह सकते हैं इन वन कोलम्ब ऑफ चार्ज देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 into 10^18 electrons. And what is the charge of one electron? It's 1.6 into 10^-19 coulombs। ये आपको याद रखना है। So this is, dear students, regarding this electric charge. Now let's try to define what's electric current. Dear students, you know the flow of electrical charges in a conductor, or we can say in a substance that conducts electricity. The flow of charge constitutes the electric current। यानी electric current का मतलब होता है जब चार्ज का फ्लो होता है, जब चार्ज फ्लो करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हियर इट इज द सेम डेफिनेशन। Here we can define this electric current as, it is defined as the rate of flow of electric charge in a conductor such as a metal wire. So with which rate the electric current, the charges flow in a conductor, that constitutes here the electric current. Dear students, the SI unit of electric current is ampere। ये आपको याद रखना है। What is the SI unit of electric current? It's ampere, which is represented by capital A. So this charge is represented by a symbol I. Dear students, if we have a charge Q that flows across any cross section area of a conductor। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर, मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, दिस इज ए कंडक्टर, या आप मान लीजिए दिस इज ए कंडक्टर। अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यानी इसके अंदर चार्ज फ्लो करता है, वो चार्ज कितनी है, क्यू है, और इन ए टाइम टी, यानी टाइम कितना लगता है इस चार्ज को फ्लो करने में, वो है टी के बराबर। देन करंट आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि इफ ए नेट चार्ज और इफ ए चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, देन द करंट आई इट इज गिवन बाय, डियर स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। ये आपको याद रखना है। ये करंट का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे, दिस आई विच इज हियर करंट, इट इज रिप्रेजेंटेड और इट इज गिवन बाय क्यू डिवाइड बाई टी, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हम सवाल पैदा होता है, दिस इज हियर करंट, व्हाट्स 1 एम्पियर करंट। जैसा कि आपको पता चला कि करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। सो व्हाट्स 1 एम्पियर करंट और 1 ए। डियर स्टूडेंट, सिंपली व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज per second, or when 1 coulomb of charge flows in any conductor in 1 second, it is said to be 1 ampere। तो सिंपली मैंने यहाँ पर लिखा it is the flow of 1 coulomb of charge per second। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है जिसमें करंट फ्लो होता है, उसमें डायरेक्शन ऑफ द जो इलेक्ट्रिक करंट होती है दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट होगी यहाँ पर, वो होगी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ द करंट यहाँ से होगी। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। आपको याद रखना है, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं
उसके अपोजिट में डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट होता है। इट इज़ कन्वेंशनली, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी और सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। Besides this ampere cut, there are also small quantities of current like milliampere. 1 milliampere is equal to 10 raised per minus 3 ampere current. ये आपको याद रखना है, मिली एम्पियर होता है यानी छोटे से छोटा करंट, 10 रेज पर माइनस 3 एम्पियर। मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10 रेज पर माइनस 3। इसी तरह माइक्रो एम्पियर करंट भी होता है यानी बहुत ही छोटा करंट, दैट्स इक्वल टू 10 रेज पर माइनस 6 एम्पियर करंट। Here, dear students, in this lecture, I have given you the historical perspective of this electricity, as well as I have made you understood electric charge, electric current. So I hope you have got it. Inshallah, in the next lecture, I am going to discuss more about it. Till then, Allah Hafiz.